अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 days, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद दरख्वास्त गुजारों को फौरी इंसाफ और आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के जज और महबूब नगर के ज़िला इंतज़ामी जज जस्टिस NV श्रवण कुमार ने कहा कि जजों और वकला को इंसाफ की मौसर फराहमी के लिए अज़्म के साथ काम करना होगा। वो हफ्ते को महबूब नगर ज़िले हेडक्वार्टर में हाई कोर्ट के जजों जस्टिस K लक्ष्मण, जस्टिस B विजय सेन रेड्डी, जस्टिस T माधवी और जस्टिस नंदी कोंडा नरसिंह राव के साथ नई अदालती इमारत के संगे बुनियाद रखने के बाद खिताब कर रहे थे। नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स तकरीबन 81 करोड़ रुपए की लागत से पालमुरु यूनिवर्सिटी के करीब बंडा मेड अली में 10 एकड़ और 5 गुंठे अराजी पर तामीर किया जा रहा है, जिसमें स्टील प्लस G+3 ढांचे के साथ 2+10 कोर्ट हॉल होंगे और तामीर 24 माह में मुकम्मल होने की तवक्को है। जस्टिस श्रवण कुमार ने कहा कि मौजूदा अदालत की इमारत नाकाफी हो चुकी है, इसीलिए रियासती हुकूमत ने 14 नवंबर 2024 को नए कॉम्प्लेक्स की मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि ज़िले में इस वक्त 18,446 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है। 19 अदालतें काम कर रही है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी मुमकिन है। जस्टिस K लक्ष्मण ने इसे वकला का देरीना ख्वाब करार देते हुए कहा कि मुकदमात के बोझ को कम करने की जिम्मेदारी तमाम स्टेक होल्डर्स पर आयद होती है और सालसी को फ़रोग देना वक्त की ज़रूरत है। जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने कहा कि क़ानूनी इमदाद, लोक अदालतों और आवाम के एतमाद में इजाफे से मुकदमात की तादाद बढ़ी है, जबकि जस्टिस T माधवी ने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद बढ़ाता है और टेक्नोलॉजी को एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस नंदी कोंडा नरसिंह राव ने कहा कि नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अराजी मुख्तस करना एक अहम कदम है और तामीर में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज N प्रेमलता, जिले कलेक्टर विजेंद्र बोई, जिले SP D जानकी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नरसिम्हा शर्मा, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल भोजंग राव, साबिक वजीर V श्रीनिवास गौर, रियासती अखिलियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, महबूब नगर बार एसोसिएशन के चेयरमैन आनंद राडियो, चीफ ऑफिसर और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। Delighted to be present here today on this momentous and auspicious occasion of laying the foundation stone for the construction of the new court buildings in Mahbub Nagar district. It's a big milestone that women are coming into the forefront and we have witnessed this today. The Anant Reddy Garu, President Bar Association, Mahbub Nagar. Bar Association has a present strength of approximately 504 advocates, and the bar being an integral pillar of justice delivery system, I am pleased to note that relation between the bar and bench in district has always been marked by mutual respect, cooperation and shared commitment to justice. It's also particularly encouraging to note that 35 lady advocates are actively practicing in this district. Their participation reflects positive societal change and reinforces the principle of inclusivity with the legal profession, which is essential for a balanced and responsive judicial system. The total sanctioned strength of staff in the district judiciary is 293, of which the present working strength is 252, leaving 41 vacant positions. Despite constraints relating to manpower and infrastructure, the judicial officers and staff continue to discharge their responsibilities with dedication and sincerity. Continuous efforts are being made to address these vacancies to further strengthen the efficiency of court administration. As on 30/11/2024, history, my predecessors, Justice Narasimha Rao and Madam Justice Madhavi Devi, they gave speech in Telugu, so I'll also continue with the same flow.
పాలమూరు జిల్లా గురించి మేడం గారు చెప్తున్నారు. పాలమూరు జిల్లాకి ఎలా పేరు వచ్చిందంటే చాలా నెమ్మదస్తులు, చాలా పాల లాంటి వారు అని. ఒక విధంగా అది నిజం. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్లో ఉన్నప్పుడు పాలమూరు జిల్లా నుంచి వచ్చేవాళ్ళు, మహబూబ్ నగర్, ఈ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, వీళ్ళంటే కొద్దిగా రిసోర్స్ఫుల్, కొద్దిగా రిచ్ పీపుల్. పాలమూరు వాళ్ళు రిచ్ పీపుల్ కాదనడం లేదు, కానీ చాలా సోషల్ ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్ ఉండే వాళ్ళకు. సో పాలమూరు నుంచి వచ్చిందంటే ఫీజు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేసే వాళ్ళం కాదు. సొసైటీకి అందరికంటే ముఖ్యము లాయర్స్. వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నది సొసైటీలో ఎవరు చేయరు. అడ్మినిస్ట్రేషన్, మున్సిపల్, ఎంఆర్ఓ, సబ్ రిజిస్టర్, అక్కడ పోతాం. డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్యన డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి, పొలిటికల్ డిసిషన్స్ దే మే బి రైట్ ఆర్ రాంగ్, డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి. లాయర్స్ కరెక్ట్ అడ్వైజ్ ఇచ్చి ఏ టైంలో కోర్టుకు పోవాలి, ఏ టైంలో కోర్టుకు పోతూ ఏ మ్యాటర్ సెటిల్ చేసుకోవచ్చు, అదంతా లాయర్. కోర్టుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా లాయర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. సో ఇట్ ఈస్ బౌండ్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద లాయర్ to ensure. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।